Lord himself inspired Brahma to act in such a way so that through him he can establish the glories of Brajavasis. Then Srila Maharaj mentioned not only Brahma, even through Shiva, even through Indra, Lord, what he did, he established the glories of Brajavasis. Like Maharaj mentions again and again, who is Bhagavan? Even though there are so many different definitions of Bhagavan, but one definition which Srila Maharaj gives is that personality. Bhagavan is that personality who becomes pleased by glorifying his devotees. Devotees, the only business, the only motivation of the devotees is to glorify the Lord. And the only activity of the Lord is to glorify always his devotees. He is more and more pleased to glorify his devotees as much as he himself engages in that activity. So Srila Maharaj is mentioning, like in Bhagavad Gita, Krishna, he himself is making promise. Yeva mam prapadyante. A person, in whatever proportion he surrenders to me, or does whatever according to that, I also perform the same activity for him. So that's why Srila Maharaj is mentioning the devotees, what they do, they are always 24 hours, out of 24 hours, they are engaged in the service of Lord, somehow or other, glorifying him, serving his devotees, thinking of him, all these activities. So in the same way, Lord is also doing the same activities for his devotees. That's why devotees, they are the whatever business devotee adopt, the same business is adopted by the Lord for his devotees. अभी जो ब्रह्मा जी हैं, उनका जब आप बताते हैं कि एक मनुष्य जब अच्छी तरह से संन्यास धर्म का पालन करता है, कर्म संन्यास 100 जन्म तक जब उसका ठीक से पालन करता है, तब वो पहले बनता है ब्रह्मा। तो जो ये ब्रह्मा स्तुति कर रहे हैं, इनकी ये कौन से वाले ब्रह्मा है, इसका क्या कोई स्पष्ट निर्देश है हमारे पास में? ना। इसलिए ये इसको कौन होता है, कौन सा युग में उसको हम हर वक्त रहता हूँ, उसे जरूर तो रहते हैं, लेकिन सिर्फ इनका एक डेफिनेशन है, जब जीव उपयुक्त जीव ना मिलता है, तब भगवान स्वयं ही ब्रह्मा का काम करते हैं। अर्थात इसको जन्म तक संन्यास धर्म पालन नहीं कर सकेगा कोई, तब भगवान ही इस काम के करते। जैसे कोई मंत्री सभा ना रहे तो प्रेसिडेंट रूल, उसको मंत्री मंत्री रहता है इस्लाम। So the next question is being asked that sometimes we hear from Srila Maharaj that if a person he follows karma sannyas properly for 100 lifetimes, then what happens? He becomes Brahma. And if a Brahma on his post he works properly for 100 lifetimes again, then he becomes Shiva. So this is the wording of Shastras. So the question came that this Brahma who became bewildered and stole cowherd boys as well as the calves, and afterward he surrendered at the lotus feet of Lord and performing this stav and stutis, praying at his lotus feet. Is this Brahma is the one who, after following karma sannyas for 100 lifetimes and becoming Brahma, is Brahma the one who is praying here, or the Brahma
our Guru Parampara. Then Srila Maharaj mentioned that it is not so easy to just mention that which Brahma is the one who is praying here, whose words are being collected in Srimad Bhagavatam. We cannot say that. Why? Because it is not very easy to say that what time this Brahma who comes in the post after following karma sannyas for 100 lifetimes, or sometimes Lord himself also takes the form of Brahma. When Srila Maharaj mentions, sometimes it happens so that when there is not even a single person who is qualified to sit on that post, means there is nobody who has followed karma sannyas for 100 lifetimes and became eligible to sit on that post. At that time what happens? Lord himself sits on his seat and acts as Brahma, performs all the activities which Brahma is supposed to follow. So these prayers, even we can say that this Brahma may be the one who has become Brahma, like Lord has become Brahma himself, and to establish the glories of Brajavasis, he himself is showing, pretending, performing the pastime of bewilderment, and he himself again glorifying and praying at the lotus feet of Lord, glorifying the Brajavasis. So this is what Srila Maharaj mentioned. Like he was mentioning, sometime what happens, that even though, like in India especially, what we have so many states, and in the states there are chief ministers, those who take care of everything. But sometimes it happens so that when there is nobody in the majority, then what happens? That the president takes over and he rules in that state. At that time there is no cabinet, no ministers, only president. So in the same way, sometimes when there is not qualified person to sit on the post of Brahma, at that time Lord himself sits. So in the same way, this Brahma can be the one, means Lord himself may be sitting on the throne of Brahma and then manifesting this pastime. और एक प्रश्न है कि यदि ब्रह्मा जी, जैसे हम लोग अभी सुन रहे हैं कि वो ब्रजवासियों की महिमा का गान कर रहे हैं, ब्रजवासियों की इतनी अधिक महिमा का गान करने के बाद में भी वो फिर ब्रज से जाने की इच्छा क्यों करते? ब्रज में रहने के लिए प्रार्थना तो किया, किंतु उसके बाद में फिर जाने के लिए भी इच्छा करते हैं। और बृहद भागवतामृत में बतलाया कि जब ब्रह्मा जी के गुणगान गाया नारद जी ने, उस समय ब्रह्मा जी की स्तुति की कि आप भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए, आपको भगवान ने मंत्र दिया, कैसी कृपा की आपके ऊपर, ये सब उनकी महिमा का गान किया। उसके बाद में जब उनकी महिमा का गान कर दिया, फिर ब्रह्मा जी ने बोला कि नहीं, यदि तुम्हें सचमुच में भगवान के भक्त को देखना है तो तुम क्या करो, तुम जाओ शिव जी को देखो, शिव जी के ऊपर ही भगवान की बहुत कृपा है, मेरे प्रति नहीं है। तो उस समय उन्होंने ब्रजवासियों की महिमा को गान नहीं किया नारद जी के समक्ष। ब्रजवासी सबसे श्रेष्ठ है ऐसा नहीं बोला, बल्कि शिव जी की महिमा का गान किया। तो ऐसा किसलिए? यदि एक व्यक्ति एक बार किसी की महिमा को समझ लेता है, उसके बाद में फिर से उन्हीं की महिमा को गान नहीं करके फिर किसी और की महिमा, शिव इत्यादि की महिमा को कैसे गान कर सकता है? क्योंकि जब भगवान की इच्छा तो उसको तो महिमा देखने से भी नहीं है, इसीलिए उसको करना पड़ता है। अब इसलिए तो ब्रह्मा ऐसा करके लास्ट में क्या हुआ, मुझे आज्ञा दीजिए मैं जाऊं। शर्मिंदा हो गया जब मैंने जो प्रे किया, तो
कहा। तब उन्होंने देखा कि मेरा क्रिया तो ठीक हुआ, तब उन्होंने सोचा हमको जाने के लिए आज्ञा दीजिए, तभी तो किया। उसमें तो देखा दिया कि एक ब्रह्मा, बहुमुख ब्रह्मा, इतना ब्रह्मा जगह है तो एक ब्रह्मा है। तो इसलिए जब उनको भगवान की इच्छा होता है उनको ज्ञान देने के लिए, तभी तो सबको बुला देते। अरे एक ब्रह्मा भी उसको शर्मिंदा होकर बोला, तभी यहाँ से जल्दी जाओ, जो काम मैंने किया जब भी इच्छा से किया तब भी सर किया। इसमें लक्ष्य ये हो रहा है कि उन्होंने अपनी इच्छा से किया पहले, उसके बाद में फिर लज्जित भी हो रही है अपनी क्रिया के कारण कि मैंने जो क्रिया की है ये अच्छी नहीं हुई है, और इसलिए उन्होंने जाने की इच्छा की। जल्दी जाने की इच्छा की। एक तो ये वाला हो गया। किंतु उन्होंने जो ब्रजवासियों की महिमा को देखा और गान किया, जैसे इसमें गान कर रहे हैं कि आपके पर ब्रह्म होने पर भी इनका कैसा सौभाग्य है कि आपको अपने स्तन का दूध इत्यादि कराते हैं, आपके साथ खेलते हैं, ये सब करते हैं। तो ये जो सब बता रहे हैं, इसके बाद में फिर क्या संभव है कि वो उनकी महिमा को भूल सके? फिर से भगवान की इच्छा तो भूल सकते, तभी तो मिल जाए। कोई देखो जो देखा था तो सुबह होता नहीं। So the next question is that how we see that what we are hearing nowadays from Srila Maharaja, that Brahma is praying at the lotus feet of Lord and he is glorifying the Brajvasis also. That oh, how fortunate these Brajvasis are. Why? Because you are for Brahma. Even for demigods, it is not possible to have your darshan given, but to speak of serving you. And these Brajvasis, they are serving you. How they are serving you? Not with awe and reverence, with spontaneous love. They are serving your lotus feet. With spontaneous love, they are serving you. They are having natural inclination, attachment for your lotus feet and for your service. So in this way, he is glorifying all the Brajavasis. But he is not only glorifying Brajavasis, even he is glorifying the cows, the calves, each and every living entity of Braj, even the plants. That's why he prayed that oh, I can become a creeper here in Braj, or any kind of other plant, or a piece of grass. So he is praying for all these things of Braj. So by this, what we conclude is that he is eligible to understand the proper position, the proper glories of Brajavasis. But then, how it is possible that in Brihad Bhagavatamrit we hear that when Narad Rishi came to Brahmaji and glorifying him, that oh, you are very dear to the Lord, you have taken birth from the navel of the Lord. Lord himself given you the mantra through his flute. He has blessed you. So in whatever way Narad Rishi is glorifying him, at that time Brahmaji said that, oh Narad, don't glorify me. This is not the real mercy of Lord. If I was really the recipient of his mercy, then how it was possible for me to make such an offense in Braj? I did such a wrong activity that which even ordinary person never does. The time when the circus of Krishna, they were taking prashadam, I bothered them. And I stole the cows, the calves and the cowherd boys. And by this,
Lord was not pleased with me. Even though I was glorifying Him, but still He was not paying even so much attention on my words. So, do you think that this is His mercy toward me? No. If you really want to see that who is a person who got the utmost mercy of the Lord, then you go to Shiva. Doesn't matter Shiva, whatever he does, Lord never becomes upset with him at all. He always takes care of him. He is always merciful to him. So, the question came that how it is possible for Brahma, the one who saw the glories of Brajavasis, the one who glorified Brajavasis himself, at this place he considered Shiva is superior devotee of the Lord. He did not mention the name of Brajavasis. Why it is like that? So is it possible that a person at first step he glorifies Brajavasis and afterward he forgets them and glorifies some other person? Is it possible? Then Srila Maharaja, in a very, very simple way, he mentioned, yes, it is possible. If Lord desires so, why it is not possible? Everything is possible if Lord desires something. Why Lord desires such a thing? That a person who was able to see the glories of Brajavasis, now he is mentioning the name of Shiva. Then Maharaja mentioned it is possible. Why? Because it's a play. At one time, Lord wanted Brahma to play in such a way that he can only see the glories of Brajavasis and glorify them. And in the other play, Lord himself wanted that Brahma should forget about anything else, about Brajavasis even, and he can only glorify Shiva. So why it is not possible? It is possible. But this is the play. Then and only then it is justified, not otherwise. So, by the mercy of Lord, by the will of Lord, everything is possible. This is what we can conclude and understand through this. But in reality, he knows the glories of Brajavasis. Why? Because he is the prominent personality in Guru Parampara. Sundar, is there any other thing which Maharaj mentioned? 一切都可能只要是执君子的意愿，能量这个大概发生之后，因为太忘了这件事情，所以他也要这个虚化。जिसको जो प्लेट पढ़ने के लिए लगाएगा वही तो करेगा। तो इसलिए इसमें क्या? सिर्फ कोई तो वाक्य हो, वो तो बुरा है लेकिन इच्छा की, तब भी उनका क्यों ऐसा मोह हुआ? वही तो भगवान का भगवत है। पर तुम अन्य का तुम समझ, उसका भी ऐसे कर दिया। The Maharaja is mentioning that Lord is known as Kartum, Akartum, Anyaka Kartum. Kartum means he can do anything and everything. Whatever is not possible, even the whole world, all the living entities, everybody may think that oh, it is not possible, but Lord can make it possible. Impossible can become possible by His will, and impossible can become possible, even the reverse. Or in whatever way Lord desires, He can make everything upside down. In whatever way He wants, everything is possible. And then the another thing Srila Maharaj mentioned, that if Lord gives or desires that anybody and everybody can act in whatever way the Lord wants, they are bound to do that. Why? Because Srila Maharaj mentions different times that all the living entities, they are like puppets in the hand of Lord. And when in whatever way He wants them to dance, they dance in that way. So this is the conclusion that Brahma or Shiva, like Maharaj mentioned Shiva, even though he himself desired that, oh Lord, I want to see your maya, I want to see your Mohini form. Even though he himself desired and he knew that Lord is coming in the form of Mohini,
So even after knowing that, he became bewildered. He forgot that this is Lord, who is adopting the form of Mohini. How come that a person who is praying for this, and then Lord is fulfilling his desire, and then he forgets in between that, oh, this is Lord acting as a Mohini. But it is possible. Why? If Lord desire, what is impossible? Nothing is impossible. Everything is possible. I think that's it for today. So tomorrow, if there will be any question regarding the same topic, then we will take questions. Otherwise, devotees have sent different questions to me on the same subject matter, so we will continue with that from tomorrow. 今天就够了，所以明天再记住。OK。महाराज जी ने अभी जो प्रश्न उत्तर हमारा हुआ, क्योंकि महाराज जी लगभग 1 महीने से कार्तिक तो पूरा महीना किया ही है ब्रह्म स्तुति को, उसके बाद में भी अभी कुछ दिनों से महाराज जी कर रहे हैं। तो इसी के बीच में भक्तों के कुछ प्रश्न हैं। कुछ भक्त लोग जो यहाँ बैठे हैं वो भी अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, और कुछ लोग जो कथा सुन रहे थे इंटरनेट के माध्यम से, उनके भी कुछ प्रश्न हैं। पहले वाले प्रश्न को तो मैंने बताया ही था। अभी महाराज जी ने जो बताया उसमें एक प्रश्न आया था कि ब्रह्मा जी जो हैं उन्होंने ब्रज में क्या किया, जाकर के पहले तो उनसे ये भूल हुई कि उन्होंने बछड़ों को चुराया, और उसके बाद में पहले सखाओं को चुराया, फिर बछड़ों को भी चुराया, और उसके बाद में 1 वर्ष के बाद में आकर के क्षमा प्रार्थना की और उनका स्तुति किया। उसके बाद में हम लोगों ने अभी इसमें जो सुना कि वो यद्यपि ब्रजवासियों की महिमा का गान कर रहे हैं। महाराज जी ने कहा कि केवल ब्रजवासियों की महिमा नहीं, वो वहाँ की गैयाओं की भी महिमा का गान कर रहे हैं। वहाँ पर लता के रूप में, पता के रूप में, किसी गुल्म के रूप में जन्म लेने वाले जो छोटे छोटे पौधे हैं उनकी भी महिमा का गान कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो उन्होंने स्तुति की ब्रजवासियों की, इससे क्या पता चलता है कि भगवान की कृपा से उनको ब्रजवासियों की महिमा का पता चला। उन्होंने स्वयं अपने मुख से कहा कि ये ब्रजवासी कितने अधिक सौभाग्यशाली हैं कि इनको आपके चरण कमलों के प्रति, आपकी सेवा के प्रति स्वाभाविक रूप में प्रीति है। शास्त्रों की बात सुन करके, किसी साधु के मुख से सुन करके कि भगवान का भजन करना चाहिए, यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरा मंगल नहीं होगा, इन सब विचारों को सुन करके उनकी कृष्ण के प्रति प्रीति नहीं है, बल्कि स्वाभाविक रूप में आपके प्रति उनकी क्या है, प्रीति है, आपकी सेवा करने की वासना है। कल महाराज जी बता रहे थे कि कैसे ब्रजवासी वो लोग क्या कहते हैं कि हे कृष्ण, वृंदावन आपकी लीला भूमि है, इसलिए हम आपकी इस लीला भूमि को त्याग नहीं सकते, और साथ ही साथ में आपके दर्शन किए बिना भी हम अपने प्राण धारण नहीं कर सकते। आप हमारे को बताओ कि हमारा क्या कर्तव्य है, हम करें तो करें क्या। तो ऐसे उन्होंने ब्रजवासियों के विषय में बहुत अधिक गुणगान गाया। किंतु फिर और एक हमारा ग्रंथ है, हमारे एक षड गोस्वामी में से गोस्वामी है जिनका नाम है श्रील सनातन गोस्वामी। उन्होंने अपने बृहद भागवतामृत ग्रंथ में वर्णन किया है कि एक बार नारद ऋषि अनेक स्थानों पर भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते जब वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो उन्होंने ब्रह्मा जी का बहुत अधिक गुणगान गाया कि वो आप भगवान के अत्यंत प्रिय हैं। इसलिए क्योंकि भगवान के नाभि कमल से आपका जन्म हुआ है, आपके ऊपर ऐसी कृपा भगवान की कि उन्होंने क्या किया, आपको अपने नाभि कमल से उत्पन्न कर दिया। उसके बाद में आप जब कमल की नाल में ऊपर से नीचे तक पुनः भ्रमण कर रहे थे, उस समय उन्होंने क्या किया, आपकी उस अवस्था को देख करके स्वयं ही कृपा करके उन्होंने मंत्र के रूप में कुछ शब्द बोले, तप तप तप, और उसके बाद में फिर उन्होंने अपनी वंशी के माध्यम से आपको मंत्र भी दिया, काम गायत्री इत्यादि। ऐसे आपके प्रति भगवान की कृपा, और भी उन्होंने उनका बहुत अधिक गुणगान गाया। किंतु उसके बाद में फिर वर्णन आया कि ब्रह्मा जी अपने कानों को ढकने लगे कि
नारद जी आप ऐसे वचन मत कहिए, वास्तविक रूप में भगवान की मेरे प्रति कोई बहुत अधिक कृपा नहीं है। यदि उनकी मेरे प्रति कृपा होती तो क्या ऐसा कदापि संभव था कि मैं उनके भोजन करने के समय में उनको इस प्रकार से उनके सखाओं को मैं ले जाता, जो कि कोई साधारण जगत में भी मनुष्य नहीं करना चाहता, किसी को खाते समय कोई बाधा देना। मैंने उनको बाधा दी, उनके सखाओं को लेकर के चला गया। यदि उनकी मेरे ऊपर कृपा होती तो मैं उनकी सेवा करता। वहां पर वो अपनी लीला कर रहे हैं, मैंने उनकी लीला में बाधा डाली, क्या इससे यही प्रमाणित होता है कि उनके मेरे प्रति कृपा थी? नहीं। ऐसा उन्होंने अपने विषय में वर्णन किया। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि हे नारद, यदि तुम सचमुच में देखना चाहते हो कि भगवान की कृपा किसके प्रति है, तो तुम जाओ शंकर जी के पास। उनकी महिमा का मैं तुम्हारे सामने क्या गान करूं? उनकी जो महिमा है वो बहुत अधिक है। कैसी महिमा है उनकी कि वो सब समय अपने मुख से भगवान के नामों का गान करते हैं। 5 मुखों से भगवान के नामों का गान करते हैं। यदि उनसे किसी प्रकार की कोई भूल हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो भगवान उनको एकदम से अनदेखा कर देते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति अपने संतान के प्रति, संतान कुछ भी क्यों ना करती रहे, उसके सारी वस्तुओं को वो क्या करते हैं? अनदेखा कर देते हैं। मगर अगर कोई नौकर उनके घर में थोड़ा सा भी कुछ इधर से उधर कुछ कर दे तो एकदम से उसको डांट टपटते हैं। तो भगवान मेरे को तो क्या करते हैं? एकदम से बहुत अधिक डांटते हैं, टपटते हैं और मेरे प्रति प्रसन्न नहीं होते। किंतु शंकर जी कुछ भी क्यों ना करते रहे, उनको कुछ भी नहीं कहते। तो इससे पता चलता है कि उनका उनके साथ में कैसा संबंध है, उनके प्रति उनकी कैसी कृपा है। तो इस स्थान पर एक प्रश्न खड़ा हुआ कि ब्रह्मा जी, जिन्होंने पहले ब्रजवासियों की, जो कि भगवान के भक्तों में सबसे श्रेष्ठ हैं, उनकी महिमा का गान किया, फिर वही ब्रह्मा बाद में क्या कर रहे हैं? शंकर जी की महिमा का गान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शंकर जी ही भगवान के सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं। तो ऐसा कैसे संभव है? एक व्यक्ति पहले किसी एक व्यक्ति की महिमा का गान करे, बाद में उनका नाम ही ना ले और किसी दूसरे की महिमा का गान करे, तो क्या ये संभव है? तो श्रील महाराज जी ने उसका उत्तर दिया कि भगवान की इच्छा से सब कुछ संभव है। क्यों? क्योंकि ये लीला है। लीला का अर्थ क्या होता है? भगवान अपनी इच्छा से जिस समय जिस वस्तु को प्रकाशित करवाना चाहते हैं उसको प्रकाशित करवाते हैं। भगवान के विषय में बताया जाता है कि वो कैसे हैं? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। उनकी इच्छा होने से जो असंभव होता है वो संभव हो जाता है और जो संभव दिखलाई देता है वो भी क्या हो जाता है? असंभव हो जाता है। और जिस किसी प्रकार से उनकी इच्छा हो, अन्यथा कर्तुम, जैसा उनकी इच्छा हो वैसा भी हो जाता है। तो इसीलिए ये जो सारी ब्रह्मा जी की स्थिति दिखलाई देती है उसके विषय में श्रील महाराज जी ने बताया कि केवल इसको लीला के माध्यम से भगवान की इच्छा समझ करके जब हम देखते हैं तब हम लोगों को सब कुछ बिल्कुल ठीक से समझ आता है, नहीं तो समझने में असुविधा होती है। तो ये भगवान की लीला ही है। जब जिस प्रकार से जो कार्य जिसके माध्यम से करवाना चाहते हैं उसके माध्यम से वो अपना कार्य करवा लेते हैं। इसी वस्तु को आज महाराज जी ने बताया। बाकी हम लोग आगे कल श्रवण करें। Okay.